सतनाम करता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आदि सच जुगादि सच है भी सच नानक होसी भी सच आदि सच जुगादि सच है भी सच नानक होसी भी सच। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਤੇ ਚੌਥੇ ਲਾਹੌਰ ਇਹ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਜਿੱਥੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਰਵਰ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸਕਰੀਨ ਲਾ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਉੱਧਰ ਕੋਈ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਾ ਕੇ सेवा संभालन जी के बच्चे एक साल अकबर लाहौर रहा। भाई जेठा जी ने जो सवालों के जवाब दिते पंडित लोगों ने सनातनी धर्म वो जवाबां सुन के ते जिस तरह भाई जेठा जी ने जवाब दिते हर एक सवाल का प्यारा नाल समझाया वो सब सुन के अकबर बहुत प्रभावित हुए। अकबर विच सुनने की ताकत सी। ये बहुत घट लोगों विच हुंदी है सुनने की ताकत। वो बहुत प्रभावित होया। उसने भाई जेठा जी ने कहा कि जदों मैं वापस दिल्ली जाना है ते मैं गोविंदवाल साहब तो होके जाऊंगा। फिर मार्च 1567 ਨੂੰ अकबर ने जदों दिल्ली ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾਏ ਤਾਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ। जिस तरह इन्हां लोकां दे नाल लश्कर हुंदा है इसी तरह अकबर दे नाल भी सी। अकबर ने अंदर सुना भेजिया कि गुरु अमरदास जी नूं दसो कि असीं आए हाँ। अंदर सुना भेजिया गया या गूंज बहुत ज्यादा अंदर सुना भेजिया गया और महाराज जी ने सुना भेजिया कि बादशाह नूं आखो
ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ। The Emperor Akbar came to Goindwal Sahib to see Guru Nanak Dev Ji in his third appearance. And when he arrived at Goindwal Sahib, he sent the message inside to Guru Amar Das Ji that I'm here. He was with big lashkar or group of his protectors and sevadars, military and all that. And Guru Amar Das Ji sent the message that ask the emperor to sit in the Pangat and have langar first. After that, I will see him. It was unthinkable for such an emperor. India at that time was today's India, Ceylon, Bangladesh, Pakistan. A huge country. And Akbar was power in the world. And he was asked to sit in the Pangat where people with uncleaned clothes or beggars or some with not nice, sightly. But he was very wise. He obeyed, sat in the Pangat and had langar. Afterwards, Guru Amar Das Ji called him inside. And Guru Amar Das Ji talked to him about how kind and loving and compassionate a king should be. Emperor Akbar listened very attentively. Mr. Cunningham in the History of Sikhs writes that Guru Amar Das Ji found an attentive listener in the tolerant Akbar. Akbar was hugely impressed. And before leaving, he stood up, folded his hands and said, "O thou divinely Darwish, please accept something from me so that I become peaceful." And Guru Amar Das Ji said, everything Allah provides. Nothing is needed and we don't have any desire.
Akbar bowed down and went to Delhi, and from there he sent a registry of the land of 12 villages in the name of Guru Amar Das Ji, and said that because you are feeding people, it's a great service to humanity. I'm touched by that, and please accept this from me. Guru Amar Das Ji took that registry and put that in an almari, almira, whatever, and never used that registry or any of the land. Vaheguru, Vaheguru. Dhyan Lonanji. Let us please become focused at the heart or in between the eyebrows. हर का मंदिर सोहना किया करन हार. Maharaj Ji says this human body is the sacred temple of the Creator. And He Himself has created this. कि मानस दे ही परमात्मा दा मंदिर है, बहुत सोहना. ते परमात्मा ने अपने हत्थी आप कढ़िया है. हर का मंदिर सोहना किया करन हार. हर का मंदिर सोहना किया करन हार. हर हर का मंदिर सोहना किया करन हार. हर का रव सस दीप अनूप ज्योत त्रिपवन ज्योत अपार.
परमात्मा की जोत इस शरीर विच वरत रही है, वही जोत सारे ब्रह्मांड विच वरत रही। The light of the sacred light of the divine, that light of uncomparable beauty, is within this body as well as throughout the universes. Rav Sas Deep Anup Jyot. इस चीज नूं समझना जी। महाराज जी कहंदे हो जोत सूरज ते चंद्रमा बन के वरत रही है। सूरज बहुत गर्म हुंदा, साड़दा है। चंद्रमा शांत हुंदा, शीतल हुंदा। चंद्रमा दी लाइट सोहनी सोहनी लगदी है। महाराज जी कहंदे जदों इसे जोत नूं आपां नाभि ते रह के वरतीए ते यही जोत ये सिर्फ शरीर नाल संबंधित सीधे जां सीधे तौर ते कम्मां विच लगी रहिंदी है ते ये जोत सूरज बन जाती है, उदों साड़दी है। चंगी तरह इसनूं आपां समझना जी। सुरती जोत एक ही है। Maharaj ji says that it's the divine light within each one. And when one starts living out of the navel point, meaning thinking and doing things which are about body directly or indirectly. Our relations are also connected with the relations are made with the physical. All relations are physical, whether it's mother, father, brother, sisters, physical relations. So then this divine light starts dwelling at the navel point and becomes a sun, a scorching heat of lust, anger, greed, attachment, ego, jealousy, all that. Rab means Suraj. Rab da matlab Suraj. Rab sas akhde Chandraman. ਤੇ ਇਹੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਗੁਰੂ ਸਮਝਾਵੇ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਉਸ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਚੁਕਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਇਹੀ ਜੋਤ ਚੰਦਰਮਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। शांत टिकी हुई, बहुत प्यारी प्यारी और वेरी सूथिंग, बहुत सुख देने वाली। इसलिए महाराज जी जदों सिद्धा नाल गोष्ट करते ते आपां नूं
कहते चंद मुख के मुख, कवन मुख चंद। सिद्धा ने सवाल किया सी, तुसी चंद्रमा बनने की गल करदे, किस तरह बनया जांदा चंद्रमा। फिर महाराज जी सारा समझाते। And he says that one's life, one remains burning in the fire of lust, anger, greed, all those. And when with great fortune a true Guru is met, the Guru takes us by our hands and raised our consciousness from the navel point up to the Hirda and above. And there, that divine light acts as a moon, which actually it is, moon. Very beautiful, very peaceful, very still, very soothing. Just an experience to be had. ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੰਦਰਮਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। And Maharaj Ji is making us all moons. हर का मंदर सोहना किया करन हार, रव सस दीप अनूप ज्योत, त्रिभुवन ज्योत अपार। हाट पटन गढ़ कोठड़ी, सच सौदा व्यापार। कहते जदों सिमरन करवा के गुरु आपां नूं उपर लिआउंदा हाट, ते उत्थे दुकानां हन। हाट पट्टन, पट्टन आखदे शहर नूं। कहंदे उपर बहुत सोहना शहर है, हाट पट्टन। हाट हट्टियां दुकानां, पट्टन शहर, गढ़ किला, कोठड़ी। उत्थे उपर शहर है बहुत सोहना, जिहदे विच दुकानां हन बहुत सोहणियां। उन्हां दुकानां विचों निमरता मिलदी है, हलेमी मिलदी है, दयालता मिलदी है, प्यार मिलता है, सारे गुण मिलते हैं। हाट पट्टन गढ़, गढ़ किला है। किला है उत्थे कि हिरदे विच जदों आपां आ जांदे हां ते महाराज जी अपने आप नूं अपने दुआले, साडे दुआले किले वांगू घूमदे हन कि आपां नूं थल्ले नहीं डिग्गन दिंदे। किला, कोठड़ी, ते फिर उपर सीस विच कोठड़ी है जिथे उदा महल है। हाट पट्टन गढ़ कोठड़ी, सच सौदा व्यापार। कहंदे उत्थे सच दा सौदा हुंदा है। उपर शहर है,
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਹਲੇਮੀ ਮਿਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਲੇਮੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਦਿਆਲਤਾ। Maharaj Ji says that when with Guru's grace and your efforts and earnest desire to leave the world, at the navel point, you are lifted up. And there's a beautiful city. And in that city, truth is traded. In that city, there are shops. From one shop, you can have humility. From another shop, you can have kindness. From another shop, you can have love for everyone. From another shop, you can have compassion and all that. They are treated. How beautifully said. कि शहर है उत्थे बहुत सोहनियां चीज़ां मिलदियां सच्चियां हमेशा रहने वाली. That if you want to have humility, there it is, at the Hirda. Love at the Hirda. All you have to do is trade with your consciousness, with the sun-dried consciousness, with humility. कि बहुत सोहना शहर है जिथे बहुत ही सोहने गुण विकदे हैं. इश्क मेरा पहुंचिया अज किस मुकाम ते. At what stage my ishq has arrived today. इश्क मेरा पहुंचिया अज किस मुकाम ते. इश्क मेरा पहुंचिया अज किस मुकाम ते. इश्क खुल के अज किस इश्क मेरा पहुंचिया
ਸਾਡੇ ਸਾਹੋਂ ਉੱਡਦੀ ਮਹਿਕ ਵੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਤੇਰਾ ਜਾਣ ਕੇ। I have been, I am dwelling in your city, and I remain at these beautiful shops of yours, shops of truth in this city. And I find that my breath is full of fragrance of humility, love, and all that. My breath is filled with the fragrance of humility, love, kindness. ਸਾਡੇ ਸਾਹੋਂ ਉੱਡਦੀ ਮਹਿਕ ਵੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਤੇਰਾ ਜਾਣ ਕੇ। I have known your city now. I have become familiar with your city. ਸਾਡੇ ਸਾਹੋਂ ਉੱਡਦੀ ਮਹਿਕ ਵੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਤੇਰਾ ਜਾਣ ਕੇ। ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ। ਸਾਡੇ ਸਾਹੋਂ ਉੱਡਦੀ ਮਹਿਕ ਵੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਤੇਰਾ ਜਾਣ ਕੇ। ਸਾਡੇ ਸਾਹੋਂ ਉੱਡਦੀ ਮਹਿਕ ਵੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਤੇਰਾ ਜਾਣ ਕੇ। ਸਾਡੇ ਸਾਹੋਂ ਉੱਡਦੀ ਮਹਿਕ ਵੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਤੇਰਾ ਜਾਣ ਕੇ। ਸਾਡੇ ਸਾਹੋਂ ਉੱਡਦੀ ਮਹਿਕ ਵੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਤੇਰਾ ਜਾਣ ਕੇ। ਸਾਡੇ ਸਾਹੋਂ ਉੱਡਦੀ ਮਹਿਕ ਵੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਹੋਂ ਉੱਡਦੀ ਮਹਿਕ ਵੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਤੇਰਾ ਜਾਣ ਕੇ। ਸਾਡੇ ਸਾਹੋਂ ਉੱਡਦੀ ਮਹਿਕ ਵੇ, ਤੇਰਾ ਜਾਣ ਕੇ। ਸਾਹੋਂ ਉੱਡਦੀ ਮਹਿਕ ਵੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਤੇਰਾ ਜਾਣ ਕੇ। ਜੀ 13 ਨਵੰਬਰ 2024 ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪੁਰਬ, ਮੁਬਾਰਕ ਪੁਰਬ ਤੇ ਜੋ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਉਹ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਖਲਕਤ ਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹੈ।
चौवां दिशा विच उहदे दरवाजे हन कि किसे पासियों भी कोई आवे इत्थे उहदा निग्गा स्वागत है। हर धर्म दे लोग उत्थे जांदे हन प्यार नाल। उथों वो लहर शुरू हुई, पहली गल। दूसरी गल, वो लहर पंजा तख्तां दे जथेदार साहिबां दी अगवाई विच शुरू हुई। एक बहुत विलक्षण घटना सी कि पंजा तख्तां दे जथेदार साहब इकट्ठे हुए। हुंदा नहीं है इस तरह। फिर पंजा तख्तां दे जथेदार साहबां दी अगवाई विच तीसरी गल, सारे धर्मां दे नुमाइंदियां दी हाज़री विच सारे धर्म दे नुमाइंदे हाज़र सन। चौथी गल, हज़ारां संगतां दे सामने। ते हज़ारां दी हज़ारां संगतां जो इंटरनेट ते जुड़ियां हुई सन। ये मनुख हिस्ट्री विच बहुत वड्डी घटना। On November 13, 2024, at the Mubarak Purb of Sri Guru Nanak Dev Ji Maharaj, an astonishing thing happened. That the wave of humility, kindness and love was launched from Sri Harmandir Sahib. Sri Harmandir Sahib, which does not belong to any religion, it belongs to all humanity. Guru Nanak Dev Ji in his 5th appearance made sure that Muslims, Hindus, Sikhs, Buddhists, all religions participated in constructing that Hari Mandir, temple of God. Not belonging to any religion. It has 4 entrances from 4 directions, from all the 4 directions, that everybody of every faith, every belief, or with no faith even, is welcomed here. This is for the Divine's whole family. Whole family. किंग चार्ल्स जो इंग्लैंड का राजा है, इदी माता जी क्वीन एलिजाबेथ, वो अपने स्वास पूरे करन तो कुछ वरे पहला लंडन तो सीधी अमृतसर साहब गई सी। उत्थे मत्था टेकिया, अरदास कीती ते फिर वापस उसे दिन उसे वेले लंडन आ गई। बस उन होर कोई काम नहीं सी।
ਉੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ, ਉਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। Few years before Queen Elizabeth left her body, flew from London to Sri Amritsar Sahib and went straight to Harmandir Sahib. She paid her respects there and prayed. Made a prayer there, and then right away came back to London the same day. She didn't go to any other place. She was requested to, but she said, no, I just came. To pay my respects at Harmandir Sahib. People of all faith come there. And so that, first of all, the wave was launched from Harmandir Sahib. Secondly, the wave was launched in the guidance, with the guidance of all the 5 Jathedars from all the 5 sacred thrones. This was the rarest of the rare event. Thirdly, representatives of all religions were there to witness it, to participate in it, to bless it. And fourthly, thousands of people were there present, and many, many more watching over the internet. So this wave of humility, kindness, love has such unbelievable blessings to it. And now, the wave wants to be set free. I have received many letters like this note from my daughter Dani in Bulgaria. At New Year's, she sent this note to me that the wave of kindness, love and humility has started from everyone's heart and reaching everyone and everything, creating a new world filled with light, joy, bliss, and happiness. How beautiful. ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੇਵ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲਣੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਸੁਣਨ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਪਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਹਲੇਮੀ ਦੀ ਤਾਕਤ,
बहुत ताकत। ते किसी भी प्रोजेक्ट नूं, किसी भी मिशन नूं पूरा करन लई उन्नू कामयाब बनाउण लई ताकत दी लोड़ हुंदी है। ताकत दी लोड़ हुंदी, भावें वो किसी भी किस्म दा प्रोजेक्ट है, भावें मिलिट्री प्रोजेक्ट है, पॉलिटिकल प्रोजेक्ट है, साइंटिफिक प्रोजेक्ट है, any, but this mission is so sacred, so sacred. We all have God-given powers. Powers to hear, powers to see, powers to think, powers to plan, power of humility, power of compassion, all that. And in order for any project to succeed, the success depends upon the power, the power. Bigger the mission, more power is needed. And this mission is to make the wave reach every person. Imagine the power is needed. And for the rest of this week, I'll talk about how to muster the power to make sure that this wave reaches everyone. बाकी दे दिन जो अपने कोल ਹਨ महाराज जी ने बख्शे थे न्यूजीलैंड विच, वो आपां गल करांगे कि वो पावर किस तरह कलैक्ट करनी ते सब कुछ। तुसीं ध्यान नाल सुनना, क्योंकि ये आपां हुण करना है, शुरू हो गया है। हाँ जी जी, आपां पिछले दिनां विच देख रहे सां कि किस तरह महाराज जी आपां नूं हर वक्त ही समझाउंदे रहिंदे कि तू नाभी तो उठ ते उपर सच्चे सुच्चे शहर विच आ, महलां विच आ, तेनू पता लगे जिंदगी की है। For the last few days we have been witnessing that how Maharaj Ji keeps talking to us, keeps urging us to rise upwards from the navel point and experience the life, the beauty of life. The beauty of life. Sun man mitra pyare, sometimes every day, all the time, हर वक्त आपां नाल यही गल्लां, दिन रात यही गल्लां।
every day, day and night, all the time, He is talking to us lovingly. Imagine how much worried He is about us. महसूस करना जी किन्ना फिक्र है उन्हें, किन्ना फिक्र है कि जदों भी ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਈਏ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ. How much He is worried, how much He is concerned about us, because He ishqs us. All the time remains concerned, all the time remains available to us so that He can raise us upwards. हर वक्त ही वो हाजिर रहंदे हन अंदर ते जदों ही आवाज मारीए हाजिर हुंदे ते इन्ना फिक्र उन्हां नूं अपना कि हर गल विच ही मिल वेला है ये सुन सुन गंढन गंढीए तू सानू रोज सुनिया कर, तू रोज संगत विच आया कर, तू रोज अमृत वेला संभालिया कर, तू रोज सारा दिन याद रखिया कर सानू. थे किते कहंदे कि किते बैठ के सोचना, किते बैठ के सोचो कि किन्ना फिक्र उन्नू हो अपने लिए. किते कलियां बैठ के सोची वे ओ की कुछ करदा तेरे लिए. Sit down alone sometimes and think what He keeps doing for you day and night. How He remains worried about you day and night. किते कलियां बैठ के सोची वे ओ की कुछ करदा तेरे लिए. किते कलियां बैठ के सोची वे ओ की कुछ करदा तेरे लिए. किते कलियां बैठ के सोची किते कलियां बैठ के किते कलियां बैठ के की कुछ करदा तेरे लिए. किते कलियां बैठ के किते कलियां बैठ के किते कलियां बैठ के किते महाराज जी कहंदे चौथे पातशाह जी, हम राख राख दीन तेरे हर सरन हर प्रभ आया. महाराज जी कहंदे तू बेनती कर, परमात्मा अगे बेनती कर
हम राख राख दीन तेरे, कि मैं तेरा हाँ, मैनू बचा ला, मैनू मेरे तो बचा ला, मैं तेरी शरण आया। आयोन मैनू तो सिर्फ उस तपदी सूरज की दुनिया विच ही रहना होंदा है, उत्थों बाहर कदी गया ही नहीं। हर जिंदगी तपदियां दी लंघी, त्या भी तपदियां दी लंघ। In this Shabad, Maharaj Ji asks us to pray to the Divine, pray to Him most humbly that He should save you. He should save you from yourself. He should save you from living in the scorching heat of sun. How worried He is. How worried He is about us. ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ, we must please feel His pain, His worries about us. We should be worried about. ਐਸ ਮੈਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਹੁਣ, ਨੀ ਮਾਏ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲੀ ਜਿਹੀ ਪਵੇ। Oh my mother, I can't live with this I anymore. I feel so restless. Enough. So many lives wasted, so many lives I put myself in a furnace. ਐਸ ਮੈਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਹੁਣ, ਨੀ ਮਾਏ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲੀ ਜਿਹੀ ਪਵੇ। ਐਸ ਮੈਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਜੀ ਖੁੱਲ ਕੇ, ਨੀ ਮਾਏ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਲਾਈ ਹੋਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਚਿੰਤ ਮੇਰੀ। Oh my mother, look, my beloved remains worried about me day and night. Day and night he remains worried about me. And seeing this, recognizing this, he remains continuously worried about me. And recognizing this, my insides sank
and an appalling silence has fallen within. Appalling silence. ਵੇਖ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਲਾਈ ਹੋਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਚਿੰਤ ਮੇਰੀ ਸਨਾਟਾ ਅੰਦਰੀ ਤੇ ਹੌਲ ਸੀ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਫਿਕਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਸਨਾਟਾ ਛਾ ਗਿਆ। ਡੈਡ ਸਾਇਲੈਂਸ ਮਾਈ ਇਨਸਾਈਡਸ ਬਿਕੇਮ। ਤੇ ਹੌਲ ਪੈ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। My insides sank. I felt like my heart sank. ਵੇਖ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਲਾਈ ਹੋਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਚਿੰਤ ਮੇਰੀ ਸਨਾਟਾ ਅੰਦਰੀ ਤੇ ਹੌਲ ਸੀ ਪਏ। ਵੇਖ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਲਾਈ ਹੋਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਚਿੰਤ ਮੇਰੀ ਸਨਾਟਾ ਅੰਦਰੀ ਤੇ ਹੌਲ ਸੀ ਪਏ। ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਲਾਈ ਹੋਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਚਿੰਤ ਮੇਰੀ ਸਨਾਟਾ ਅੰਦਰੀ ਤੇ ਹੌਲ ਸੀ ਪਏ। ਵੇਖ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਲਾਈ ਹੋਈ ਚਿੰਤ ਮੇਰੀ ਸਨਾਟਾ ਅੰਦਰੀ ਤੇ ਬਣ ਗਈ ਸਾਇਥਰੂ ਅੱਖੀਆਂ ਸੀ ਡੁੱਲ ਪਈਆਂ। Witnessing that, recognizing that, all of me became tears. And the tears could not be held within. They started overflowing through my eyes. ਹੰਝੂ ਵਗੇ ਕੁਝ ਅੰਨ ਵਗੇ ਹੀ ਰਹੇ। ਕੁਝ ਹੰਝੂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਡੁੱਲੇ, ਕੁਝ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। These are not just some imaginary thoughts or no, this actually happens. This happens recognizing, after we recognize that he is so worried about me and here I am. He is worried about me and I'm not worried about me. बन गई शायद, can we really make available to be touched by these emotions? बन गई सायथरू ਅੱਖੀਆਂ ਸੀ ਡੁੱਲ ਪਈਆਂ।
ਹੰਝੂ ਵਗੇ ਕੁਝ ਅਨ ਵਗੇ ਹੀ ਰਹੇ. Some tears overflowed through my eyes. Others just got frozen with it. ਕੁਛ ਹੰਝੂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵਗੇ, ਕੁਛ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜੰਮ ਗਏ. ਬਣ ਗਈ ਸਾਇਥਰੂ ਅੱਖੀਆਂ ਸੀ ਡੁੱਲ ਪਈਆਂ. ਬਣ ਗਈ ਸਾਇਥਰੂ ਅੱਖੀਆਂ ਸੀ ਡੁੱਲ ਪਈਆਂ. ਬਣ ਗਈ ਅੱਖੀਆਂ ਸੀ ਡੁੱਲ ਪਈਆਂ. ਬਣ ਗਈ ਸਾਇਥਰੂ ਅੱਖੀਆਂ ਸੀ ਡੁੱਲ ਪਈਆਂ. ਬਣ ਗਈ ਸਾਇਥਰੂ ਅੱਖੀਆਂ ਸੀ ਡੁੱਲ ਪਈਆਂ. ਹੰਝੂ ਵਗੇ ਕੁਝ ਅਣ ਵਗੇ ਹੀ ਰਹੇ. ਹੰਝੂ ਵਗੇ ਕੁਝ ਅਣ ਵਗੇ ਹੀ. ਹੰਝੂ ਵਗੇ ਕੁਝ ਅਣ ਵਗੇ ਹੀ ਰਹੇ. ਹੰਝੂ ਵਗੇ ਕੁਝ ਅਣ ਵਗੇ ਹੀ ਰਹੇ. ਬਣ ਗਈ ਸਾਇਥਰੂ ਅੱਖੀਆਂ ਸੀ ਡੁੱਲ ਪਈਆਂ. ਹੰਝੂ ਵਗੇ ਕੁਝ ਅਣ ਵਗੇ ਹੀ ਰਹੇ. ਬਣ ਗਈ ਸਾਇਥਰੂ ਅੱਖੀਆਂ ਸੀ ਡੁੱਲ ਪਈਆਂ. ਹੰਝੂ ਵਗੇ ਕੁਝ ਅਣ ਵਗੇ ਹੀ ਰਹੇ. ਬਣ ਗਈ ਸਾਇਥਰੂ ਅੱਖੀਆਂ ਸੀ ਡੁੱਲ ਪਈਆਂ. ਹੰਝੂ ਵਗੇ ਕੁਝ ਅਣ ਵਗੇ ਹੀ ਰਹੇ. ਬਣ ਗਈ ਸਾਇਥਰੂ ਅੱਖੀਆਂ ਸੀ ਡੁੱਲ ਪਈਆਂ. ਹੰਝੂ ਵਗੇ ਕੁਝ ਅਣ ਵਗੇ ਹੀ ਰਹੇ. ਬਣ ਗਈ ਸਾਇਥਰੂ ਅੱਖੀਆਂ ਸੀ ਡੁੱਲ ਪਈਆਂ. ਹੰਝੂ ਵਗੇ ਕੁਝ ਅਣ ਵਗੇ